So well students, we are going to complete exercise 4.6 today. Last time I told you how to find it out whether the system is consistent, system of linear equation is consistent or inconsistent. So whenever, if I talk of non-homogeneous equations, if determinant is non-zero, that means the matrix is not the singular matrix, then there will always be unique solution. So let's solve some problems from this. So the condition for consistency of the system of equations that we have already done. Now the question is solve system of linear equations using matrix method in exercise 7 to 14. That means question 7 to 14. इन क्वेश्चंस में जितनी भी इक्वेशंस दी हैं उनमें होमोजीनियस नहीं है, राइट? मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉन होमोजीनियस आएगा। अब 7 to 14 में मैं एक या दो प्रॉब्लम्स करूंगा, रेस्ट यू विल ट्राई, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सिमिलर है। एक मैं 2x2 मैट्रिक्स की करूंगा, एक 3x3 मैट्रिक्स की। 7th क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन है 5x plus 2y equal to 4, then 7x plus 3y equal to 5. Now I told you what the process is. हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं. Let A is a matrix formed by the coefficients of x and y, 5, 2, 7, 3. Then I form another matrix, let's say X, which is the matrix of the unknowns x, y, and then I form a matrix B, which is the matrix of constants 4 and 5. Now, I think in the last video, it's clear now that Ax equal to B, rather you can try it here also. And we have derived the result that x equal to A inverse B. That is the most important, right? Now first of all, I take determinant of A just to find whether the matrix is singular or not, and if it is non-singular matrix, as it is non-homogeneous system of equations, we will have unique solution. Equations कैसे non-homogeneous, अगर determinant A not equal to 0 आता है, non-zero आता है, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन ही निकलेगी. डिटर्मिनेंट ए देखते हैं क्या बनता है. 15 minus 14, that is 1, right? Because determinant A is not equal to 0, therefore it has unique solution. It has unique solution. Now अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना. कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. मुझे A इनवर्स चाहिए, और A इनवर्स किसके इक्वल होता है? रादर A इनवर्स आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाला था, बट आई थिंक इफ डिटर्मिनेंट A को भी हम निकाल चुके हैं. इफ आई यूज दिस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, दैट विल बी बेटर हियर. तो मैं इसी प्रोसेस से निकालूंगा A इनवर्स. तो सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारे पास है, तो व्हाट आई नीड इज एडजॉइंट A. एडजॉइंट A आप जानते हैं, इट इज मैट्रिक्स ऑफ द इट इज मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, या सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर निकालें इसका, ये और ये क्या 3 आया, और साइन चेंज नहीं होगा. इसका निकालें, ये एलिमेंट 1 1 है, ये 1 2 है, यहाँ साइन चेंज होगा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. ये और ये 7, तो यहाँ आएगा -7. मैं रो से लेके कॉलम में लिख रहा हूँ, दैट मींस आई एम टेकिंग द ट्रांसपोज आल्सो, तो डायरेक्टली आई विल गेट एडजॉइंट A. तो रो के एलिमेंट लेके मैं उसको कॉलम में लिख रहा हूँ ताकि सीधा ही एडजॉइंट A मिल जाए. अदरवाइज अगर एक स्टेप ऐड करना है तो पहले आप कोफैक्टर उसी ऑर्डर में लिखे, फिर ट्रांसपोज ले लें और एडजॉइंट A निकालें. नाउ ये रहा 7, 2 आएगा, और ये कौन सा एलिमेंट है, 8 2 1, साइन चेंज हो जाएगा, -2 आएगा.
यहाँ देखें ये और ये 5, साइन चेंज नहीं होगा और ये 5 आएगा, तो एडजॉइंट ए मेरा निकल गया। देयरफॉर ए इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना था 1 इंटू एडजॉइंट ए 3 -2 -7 5। अब मैं लिखूंगा x बिकॉज x इक्वल टू ए इनवर्स बी। देयरफॉर x कौन सी मैट्रिक्स है xy की, ए इनवर्स कितना निकला आपका 3 -2 -7 एंड 5 इंटू बी। बी मैट्रिक्स देखें, इट वॉज द मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स हियर 4 5। तो ये क्या बन जाएगा xy इक्वल टू 3 इंटू 4 3 4 12 12 minus 10 2 minus 28 plus 25 minus 3. Comparing the two matrices, x equal to 2 and y equal to 3 is the answer. So I will take on the next question. I will now take one question where I will have 3 simultaneously equations. If you check here, sorry, it is -3. I haven't written it -3. Please correct it. Write it -3. Now it is great. So I am taking the next question. So now question 8. It has 2 equations. 9 has 2. 10 has 2. 11, 12, 13, 14. So over this I am taking question 12. Rest questions are similar. वही प्रोसेस है, सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं। अगर एक आइडिया आपको हो जाए तो यू कैन डू इट। 3 इक्वेशंस दिए हैं इसमें, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z equal to 0, x plus y plus z equal to 2. Let A be the matrix 1 minus 1 1 minus 1 1 2 1 minus 3 2 1 minus 3 and it is 1 1 1. I think that's clear. Now x is a matrix x y z and B is a matrix 4 0 2. Because Ax equal to B, therefore x equal to A inverse B. If A inverse exists, that means if we have determinant A not 0, not equal to 0. So let me find determinant A. I am trying to find it directly. Just here. I will expand. I will first write it in the determinant form and then I will expand it by the first row. It's 1 here. Then 1 plus 3 4. Then plus 1. 2 plus 3 5. Then plus 1 again. 2 minus 1 1. Which is equal to 4 plus 5 9, 9 plus 1 10. Therefore, because determinant A is not equal to 0, hence unique solution exists. Now I will get A inverse. To get A inverse, what I need? Adjoint of A. So first we get adjoint of A.
Now please pay attention here. It's 1. It's, if I hide this one and this one, it will be 1 plus 3, 4, and sign will not be changed. This one, it's 2 plus 3, 5, sign will be changed. So alternatively, if sign is not changed in the first, second it will change, then next it will not be changed. Now this one, it is 2 minus 1, 1, and sign will not be changed. Now this one, minus 1 minus 1 minus 2, sign will be changed, it will become 2. 1 minus 1, 0, whether it is of plus sign or minus sign, it remains 0 only. Now this and this one, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, sign will be changed. So it is minus 2. Because this is element now 8, 2, 3. Now this one, 3 minus 1, 2, and sign will not be changed. 3 minus 1, because I will check it again. 3 minus 1. Here, minus 3 minus 2 minus 5, sign is changed, 5. Here, it is 1 plus 2, 3, and sign will not change. So I got adjoint A. Because A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint A, therefore A inverse is equal to 1 upon 10 into 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3. Now x equal to A inverse B, because x equal to A inverse B, A inverse B, therefore x equal to, x is, let me write what x is. X is x, y and z is equal to, write A inverse 1 upon 10, 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3, into B. What is B? 402, 402. Check whether multiplication is possible or not. 3 columns, and here we have 3 rows. Yes, it is. So I will write therefore x, y, z is equal to 1 upon 10. Let's multiply this now. 16 plus 0 plus 4. 16 plus 4, 20. Minus 20, 0 plus 10, minus 10. 4, 0, 6. 4 plus 6, 10. Rest of the part I am writing here. Therefore, x, y, z is equal to 1 by 10 into 20 is 2. 1 by 10 into minus 10 is minus 1. 1 by 10 into 10 is 1. Therefore, comparing the two matrices, x equal to 2, y equal to minus 1, z equal to 1 is the solution. So you check it. And now, rest of the questions from 7 to 14, that means whatever I have left, you try it yourself. I am going to erase this one. And I am taking up the question 14. Question 14 is also the same, only the way of asking the question is different. Let me explain you. I will just give you the hint for 14 and 15, and I want you to try that. Sorry, 14 you can try. I am going to give you the hint for 15 and 16. The question is, if A equal to 2,
3 1 minus 3 2 1 5 minus 4 minus 2. Find A inverse using A inverse solve the system of equations. तो इक्वेशंस हमें गिवन है जिनको हमें सॉल्व करना है. 2x minus 3y plus 5z equal to 11. 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5. X plus y minus 2z equal to minus 3. Now students, listen. Suppose I have to get the solution for this. The question is find A inverse. So that means A inverse exists. That means A will not be 0. But suppose I am required to get A. So what type of matrix it would have been? 2 3 1 2. Let me write in this order. 2 minus 3, then 5 3 2 minus 4, and then 1 1 minus 2, and matrix x y z, and then B 11 minus 5 minus 3. The question is same as we were doing. Now check here what matrix A they have given. So whatever matrix we have to get A, they have already given. They have said find A inverse. Can you find A inverse? Which is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. And take it granted here determinant A is not 0. So after getting A inverse, the question is find A inverse and using that solve the equations. So when A inverse is there, can you write x equal to A inverse B and find the solution? Now the same question. So you please try it yourself. So I am moving on to 16 then. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन. इट इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. कॉस्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat. So we have onion here, we have wheat, and third item rice. I suppose the cost is given 4 kg of cost, 3 kg and 2 kg. That together they cost rupees 60. Then 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg. I suppose let cost of onion be rupees x per kg. Cost of this is, let's say, rupees y per kg. And cost of this is rupees z per kg. आपने ये क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट्स वाले जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं बहुत सारे किए होंगे क्लास 10th में भी. अब हमें इक्वेशन फॉर्म में लाना है. नाउ आई नीड टू फ्रेम द इक्वेशंस. तो पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं. द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन. 1 kg की कॉस्ट x है तो 4 की कितनी होगी 4x. देन 3 kg wheat plus 3y, then rice is 2 kg, 2z, and together they cost how much? 60. So that is first equation. Then 2 kg onion, 2x, plus 4 kg wheat, 4y, plus 6 kg rice, 6z, equal to 90. 6 kg onion, that is 6x, 2 kg wheat, 2y, plus 3 kg rice, 3z, and the cost is 70. Can you solve the three equations? The question is find the cost of each, and it is written using matrix method. So can you get the value of x, y, z out of these three equations as we have already done? जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया सेम वे हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. x, y, z, x किसकी वैल्यू आ जाएगी?
ओनियन पर केजी। सपोज ये 4 आती है तो इट इज ₹4 पर केजी। ठीक है, सपोज ये 20 आती है, इट इज ₹20 पर केजी। ठीक है, आई एम सपोजिंग दैट। तो XYZ निकालना एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। So I have given you the hint. Now you try it yourself. Now one question I will take where the system of equation will be consistent but will not have the unique solution, will have infinite many solution. जब infinite solutions हैं तो natural है कि there will not be one solution, then I will find the solution in some in some variable unknown quantity में। जैसे वो quantity change होगी तो वैसे ही solution change होगी। Let me do one question for you. Suppose I have the equations 2x minus y plus 3z equal to 5. 3x is 3x plus 2y plus 2y minus z equal to 7. And then it is 4x plus 5y minus 5z equal to 9. So these are the three equations. I have deliberately taken a question which will have infinite many solution, but check करना पड़ेगा। अब question है solve it. It is, let me write an example here. The question is same, solve for x, y, z using matrix method. मैं मैट्रिक्स अपनी A ले लेता हूँ। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी वो? 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -1. Let me take matrix B. X ले ले पहले. It is x, y, z. And let me take B. It is 5 7 9. Let me try to find determinant here. I will take it in determinant form and expand it by R1. It is 2, then plus 1, minus 15 plus 4, minus 15 plus 4, minus 11 plus 3, 15 minus 8, that is 7. Let me check it again. I don't think it's correct. 2 minus 10, it is plus 5. Minus 10 plus 5, that is minus 5, right? Minus 1, it will become plus 1. It is minus 15 plus 4, minus 11. It's correct now. And now it is 3, 15 minus 8, that is 7. It is minus 10 minus 11 plus 21. I think it is equal to 0. Now because determinant A equal to 0, the system of equations have infinite, sorry, I can't say right now, मैं अभी नहीं कह सकता. I will write the system of equation will not have unique solution. This I can say, will not have unique solution. अब क्या चीज डिसाइड करेगी कि इनफाइनाइट है या मैनी सॉल्यूशन है? दैट इज एडजॉइंट A into B. तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट A निकालना है. एडजॉइंट A क्या निकलेगा? आई एम कमिंग बैक हियर.
2, ये बनेगा -10 +5 -5 -5, देन -15 + 4 -11, sign will be changed 11. Here 15 - 8 7 and sign will not be changed. Here A11 1 2 this one I have to take now. -5 sorry +5 +5 -15 -15 + 5 is -10. Sign is going to change, it is 10. I will cover this one. This is over. It is -10 -12 -22 -22 and sign is going to -22. Sign is not going to change. -22. Here this one and this is gone. 10 + 4 14. 14. I am looking it for this element. Yes. 10 + 4 14. So it is element A23. Sign is going to change for this. 10 + 4 14. It will be -14. Next. Here. Let me check it once again, please. + 4 14. It's correct. Now this one. 1 - 6. 1 - 6. 1 - 6 is -5 and sign is not going to change. It's -5. Here -2 - 9. -2 - 9 is -11. Sign is going to change 11. Here 4 + 3 7 and it will remain 7. Now I have to get adjoint A into B. So that is equal to -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7. So because the calculation is a little bit, I think I have written adjoint A. B I have to write 5 7 9. The calculation is going to be little bit length here. So please pay attention here. It is equal to -5 into 5. It is -25. I am writing it here. 10 7s are 70. -5 into 9 -45. The sum is 0. 11 into 5 55. -22 into 7 -154. 11 into 9 99, and if I add it 9 5 14 4 1 9 5 14 and 9 5 14 and 1 15, again it is 0. Next part, 7 5s are 35, 14 7s are 98 -98 and 9 7 63, 6 5 3 8 69, again it is 0. So because adjoint A into B equal to 0, the system of equation have infinite many solutions. Now if the adjoint A into B is not 0, it will have no solution. तो उसके बाद हम छोड़ देंगे, solution है ही नहीं. इसमें infinite solution है. Still we will try to get the value of x and y in terms of let's say k, some other variable. ठीक है, उसमें हम z को eliminate, एक वेरिएबल को eliminate करेंगे. उसका क्या प्रोसेस है वो मैं दिखा रहा हूं. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. No, what I will do, I will say put z equal to let's say k in the given equations.
अदरवाइज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, कितनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारी है, सारी तो मैं निकाल नहीं सकता, बट आई विल ट्राई टू गेट x एंड y इन टर्म ऑफ सम अदर अननोन। लेट्स सी, अगर हमने z को k डाल दिया तो ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज, आई एम नाउ स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर, 2x माइनस y, ध्यान से देखना, z को k डाला, ये बना 3k, इसको उधर शिफ्ट किया तो क्या बन गया 5 माइनस 3k। अब ये 5 माइनस 3k में पूरा कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है, दैट्स द आइडिया। देन आई विल हैव अनदर इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस k है, उधर जाके क्या बन जाएगा 7 प्लस k। लेट मी सी क्वेश्चन वंस, I think it has. Now, what here I am going to do is, I just need two equations to get the value. I know it has got infinite solution. ठीक है. Even if I take 3, I will have infinite solutions. If I take 2, it will solve my purpose. Now, again I will make the matrix A here. Let A is equal to coefficient matrix 2 minus 1 3 2, x matrix x and y, and B matrix. Now this whole will be taken as constant here, and this is the complete constant, right? I will get determinant A. It is 4 plus 3, it is 7 now, ठीक है, not equal to 0. Therefore, we will have unique solution. We will have unique solution. अब ये जो solution मिलेगी, ये मिलेगी in terms of k. I am going to erase this one now. Rather, adjoint A जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा। Adjoint A इस केस में easy रहेगा। Adjoint A is this, so adjoint A we have got, so let me find A inverse now. A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. Therefore, A inverse equal to 1 upon 7 2 1 minus 3 2, because x is equal to A inverse B. हमने किया है क्वेश्चंस में, x हमेशा इनवर्स p आता है, x किसके इक्वल है, एक्स वाई इक्वल टू a इनवर्स है 1 अपॉन 7 2 1 माइनस 3 2 इंटू b, b कितना है हमारे पास 5 माइनस 3 के 7 प्लस के। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्लीज ध्यान से सुनना, एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 7 2 इंटू 5 10 10 माइनस 6 के, ये 2 पूरा कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 प्लस के ये एलिमेंट, और यहां पे माइनस 15 प्लस 9 के प्लस 14 प्लस 2 के, राइट। सो एक्स y इक्वल टू 10 एंड 7 1 अपॉन 7 को लिख लेते हैं ऐसे, 17 माइनस 5 के माइनस 15 प्लस माइनस 1 प्लस 11 के, therefore x इक्वल टू 17 माइनस 5 के अपॉन 7 एंड y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 11 के अपॉन 7, और z क्या था, हमने सपोज किया था z को k, तो ये x y z की वैल्यू हमारी k में आ गई। तो अगर ऐसा होगा, हम कोई दो इक्वेशन लेंगे बाय टेकिंग, आप x को भी k ले सकते थे और y को भी k ले सकते थे, हमने z को लिया और फिर हमने क्या किया,
दो लीनियर इक्वेशंस बनाई दो वेरिएबल में, इनको कांस्टेंट कंसीडर करके, एंड देन वी फॉलो द प्रोसेस, सेम प्रोसेस जैसा हम कर रहे थे. तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डन बिकॉज इट वाज नॉट इन द टेक्स्ट बुक. तो नेक्स्ट टाइम हम मिसलेनियस शुरू करेंगे और मिसलेनियस खत्म करने के बाद एक बार फिर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट